Hello students, welcome back. In this module, we're gonna start with a new chapter called as Death of Partner. For reconstitution, obviously we have understood two chapters very thoroughly, that is admission of partner and retirement of partner. So I hope you now exactly know what is reconstitution of partnership. So here in this chapter, we will focus more on the adjustments to the death of partner concept. Okay, so here we understand what is death of partners effect in the accounting. Okay, reconstitution हमने समझ लिया है, definition हमने देख लिया है, adjustments जो usual reconstitution के है, like the calculation of ratios, revaluation of assets and liabilities. Then we also do accumulated profits and losses का transfer to capital account, right? All such adjustments, especially goodwill treatment, these adjustments are exactly same as retirement of partner. So before going forward, I want to make it very clear that if you want to understand all such adjustments, please view retirement of partner chapter ka theory part. Here what we're going to do is we will understand the further adjustments which are exclusively for death of partner. Okay, reconstitution part we have covered in retirement of a partner, so there you can view all those theory part again. Now let us start with death of partner. So let us have an introduction. First of all, a partner will cease to be a partner automatically when he dies. कोई पार्टनर का डेथ होता है तो वो पार्टनर नहीं रहेगा, नो लॉन्गर, ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली ही इज नो मोर, तो डेफिनेटली ही सीज टू बी अ पार्टनर. When a partner dies, his representative or the executor of his estate are entitled to all rights which have been stated in case of retirement of partner. जब पार्टनर रिटायर होता है तो बात अलग है, he can himself or she can herself communicate to the other partners. They can have a mutual discussion and they can agree on certain things. But death of partner में ये chance तो है नहीं. So who will look after the representative or the legal executor of that deceased partner? Now, क्या ये cases हो सकता है? So capital adjustment, goodwill, accumulated profits losses, profit and loss on revaluation of assets liabilities, that is, and share in profit up to date of death. This is very new. Okay, as there is a deceased partner, now death cannot be planned in natural course, right? So retirement can be planned. तो ऐसा हो सकता है शायद कि retirement के वक्त other partners are suggesting that partner who wants to retire कि आप at the end of the year retire हो जाना. ठीक है, तो usually what will happen is जो भी accounting है अच्छे से process होगा, end of the, मैं ये सिर्फ example दे रहा हूँ, it is not always कि वो end of the year retire होगा, but ऐसा हो सकता है कि he or she is retiring on the at the end of the year. तो वहां पे तकलीफ नहीं है, वहां पे अपना पूरा अकाउंटिंग हो जाएगा और फिर दैट पार्टनर विल रिटायर, तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग और ये सब में अलग से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. बट लाइक आई सेड, डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड इन नॉर्मल कोर्स, करेक्ट? सो इसीलिए जब डेथ हो जाएगा वो पार्टनर का, फॉर दैट डिसीज्ड पार्टनर, उसका प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ और हर डेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा. So this is the very new adjustment for us to calculate share of profit up to the date of death. तो ये सब कौन करेगा? So representative or executor of his estate. पार्टनर का जो भी legal representative या executor रहेगा, they will handle all these things. Moving forward, let us also understand the amount ascertained on death of partner will be paid to his legal heirs or will be treated as loan from legal heirs. जो भी amount ascertain करेंगे हम for that deceased partner, that will be paid to his legal heirs or will be treated as loan from legal heir. तो बाद में वो settle करेंगे या तुरंत पे कर देंगे. ठीक है, किसको जाएगा वो? legal heir को जाएगा. Normally executor हम जिसे बोलते हैं, he will get that amount. Now moving forward, retirement
ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि जैसे मैंने बोला जो बेसिक थियरी है वो एज इट इज रखना है, लेकिन कुछ अलग बातें हैं जो हमें डेथ ऑफ पार्टनर में स्पेसिफिकली पढ़नी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस फर्स्ट। हियर वी गो। डेथ मे ऑकर एट एनी टाइम विदाउट नोटिस, ऑब्वियसली, where the time of retirement of a partner is generally pre-planned, possibly at the end of the year. Like we have discussed this, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेथ पे प्री प्लान ऐसा हो ही नहीं सकता फॉर नेचुरल कोर्स। रिटायरमेंट कैन बी प्री प्लान, कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो जाओगे तो दैट विल बी बेटर इन ऑल द वेज, लेकिन डेथ का ऐसा हो नहीं सकता। मूविंग फॉरवर्ड, of retirement of a partner, the amount payable to retiring partner is paid to him or is transferred to his loan account. रिटायरमेंट में क्या है, वो आदमी है तो हम डायरेक्टली उसको पे कर सकते हैं अमाउंट, या फिर उसके लोन अकाउंट में टेम्पररी ट्रांसफर करके जब भी फंड्स रेडी होगा वी कैन पे इट ऑफ एज पर द केस में बी। बट डेथ ऑफ पार्टनर में क्या हो जाएगा, वेयर एज इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर अकाउंट। वो डिसीज पार्टनर तो अभी है नहीं, तो किसको पे करेंगे ये अमाउंट, तो लीगल हेयर को पे करेंगे या एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, या अगेन वी विल ट्रीट इट एज लोन और बाद में उनको पे करेंगे। इनको डिसीज पार्टनर को तो वी कैन नॉट पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडजस्टमेंट्स इन डिसीज पार्टनर्स अकाउंट। जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अलग अलग एडजस्टमेंट हो सकता है। नाउ व्हाई वी हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें शायद आपको फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स और आगे जाके बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे फॉर न्यू फर्म, या तो आपको सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट विद अदर वर्किंग्स बनाने बोलते हैं। So two types of questions are asked for this particular chapter, या तो full length question जहां पे सब करना है, या तो सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करना है और उसका वर्किंग्स करना है, सर्टेन वर्किंग जैसे प्रॉफिट शेयर, उसका गुडविल शेयर, ये वर्किंग्स हमें करने बोलते हैं। सो फॉर दैट अगर आपको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट बनाना है डिसीज पार्टनर का, या ओवरऑल कैपिटल में भी जो भी डिसीज पार्टनर के कॉलम में लिखना है वो हम यहां पे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, सो हियर वी अंडरस्टैंड अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली उसका अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा अगर हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली बोला है, या कंबाइन कैपिटल अकाउंट बना तो भी हिज कॉलम वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीज्ड पार्टनर्स कॉलम में क्या जाएगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड। सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If the deed provides the interest on capital from the date of last balance sheet to the date of death should be calculated, such interest should be credited to the capital account. अगर डीड में बोला है, मतलब हमारे लिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सो एंड सो, तो कहां से कहां तक वो कैलकुलेट करेंगे फॉर डिसीज्ड पार्टनर, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ हिज और हर डेथ। ओके, उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कहां पे लिखेंगे, तो कैपिटल के क्रेडिट में ये लिखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी देना है, स्पेशली दैट डिसीज्ड पार्टनर इज गेटिंग अ सैलरी, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। इफ डीड प्रोवाइड सैलरी फॉर पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ शुड बी कैलकुलेटेड एंड सच सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो, that would be credited to capital account. The only point here to understand, to remember is last balance sheet का जो भी डेट है, from that date till death of partner. पूरे साल का सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बिटवीन अगर डेथ ऑफ पार्टनर हुआ है तो दिन तक का, till that date we have to calculate it. Moving forward to the next part. थर्ड क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी हमें देना ही है। इफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन शुड बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द कैपिटल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ऑब्वियसली या तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या तो रीवैल्यूएशन लॉस आएगा,
तो इसीलिए हमें बोला है क्रेडिटेड और डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें वो देना पड़ेगा। अभी ये सर अलग से क्यों दिया है? हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सब पार्टनर्स को बांटा हमने प्रॉफिट या लॉस। फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वी डिड द सेम। यहाँ पे जैसे मैं बोला, अगर आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेंगे डिसीज्ड पार्टनर का, ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तब आपको रिवैल्यूएशन का वर्किंग करना पड़ेगा। पहले जितने भी पार्टनर्स है उनको बांटना पड़ेगा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, और सिर्फ डिसीज पार्टनर का उसके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड एज इट इज मेंशन्ड। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखने हैं हमें। फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा आप फ्लो में कर दोगे, लेकिन सिर्फ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करने बोला है, आपको रिवैल्यूएशन या तो वर्किंग नोट में या तो टी फॉर्म रफ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट याद रखने हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज रिजर्व फंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगेन इन फुल लेंथ क्वेश्चन आप करते ही हो, ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है वो जितने भी पार्टनर है, लेट अस अज्यूम 3 पार्टनर है तो तीनों में बांट दोगे, बट ओनली इफ वी हैव टू प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर खाली हमें उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी रिजर्व फंड, the share of deceased partner will be credited to his capital account, and if there is any undistributed loss, the share of deceased partner in such loss will be debited to his capital account. Profit रहेगा तो obviously credited, loss रहेगा तो debited to his capital account. Moving to the next part, share of accrued profits of the firm. The share of deceased partner in accrued profits, that is like I have told you in first slide itself, if you remember, हमें अलग से deceased partner का share of profit calculate करना है till date of his death। तो वो जो profit है वो accrued profit हम transfer करेंगे in capital। So this can be ascertained either by preparing profit and loss account from the date of last balance sheet to the date of death of a partner, or on the basis of average profit in the firm of number of years immediately preceding the year of death। So ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे अलग से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा वो दे देंगे डिसीज पार्टनर को, या एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑफ लास्ट सर्टेन ईयर्स, और वो बेस के प्रॉफिट पे, एवरेज प्रॉफिट पे we will calculate current year's profit share and then we'll give it to deceased partners. Okay, ये usually for our syllabus last वाला जो part है वही आता है। Will not prepare P&L account, we have to calculate the base profit. It can be average profit or previous year profit, ऐसा आपको question में दिया जाएगा clearly क्या base लेना है हमें, and based on that profit we'll calculate deceased partner share। ये जब actual adjustment आएगा you will understand it very thoroughly. Now, as may be specified in partnership deed, कैसे deed में बोला है, मतलब ये तो usual information है, मैंने आपको exam point of view, syllabus point of view से बता दिया कि हमें usually ये second वाला part आता है in our adjustment. Now, going forward, share of goodwill. Till the date of his death, he was also actively participating in all the workings of the business. Maybe or not actively, it is okay, but he was a major contributor for building a goodwill of the firm. So for that he should get his share of goodwill. Share of deceased partner in goodwill is to be ascertained according to the provisions of partnership deed. So whatever case we have seen in retirement of a partner, similar cases might be having in this chapter as well. So we will calculate goodwill if necessary for the firm, and then we'll go for share of deceased partner in it. Seventh is drawings of partner and interest on drawings. Like we have to give him salary till the date of death, we have to provide interest on capital till date of death. Similarly, drawings and interest on drawings also be calculated. Drawings of deceased partner should be calculated from the date of balance sheet to the date of death, should be taken into account by debiting his capital account. Also for interest on drawings, if date we don't know, we charge usually average interest, that is 6 months interest. But for deceased partner, we exactly know the date of death, so we can calculate interest accordingly. Okay. Moving to the next part. This is important. Amount received in respect of insurance policy. So there might be
one adjustment for insurance policy. Let us understand it. If life insurance policy was taken by the firm, it should be credited to capital account in profit sharing ratio. If there is any life insurance policy given in question, we have to credit it in capital account. As there is a death of one of the partners, so life insurance policy has to be distributed amongst the partners. The above adjustments are made in deceased partner's capital account, and the balance in capital account is transferred to his executor's account or legal representative's loan account. So this was the adjustment 8. So till adjustment date, whatever information we have in our question, we'll do it accordingly. And once we are done with all the adjustments, what we have to do is this. So such adjustments, deceased partner's capital account में लिखेंगे, balance in capital account can be transferred to his executor account or legal representative loan account. The loan may be immediately paid off or retained in the firm. Again, this will be given to you in question, whether we are paying the loan immediately or it should be kept in the business. Okay, we have to show it as loan. That will be given to you in question. So these are the adjustments related to deceased partner. These are the additional adjustments we have. Remaining adjustment, again I'm repeating the same. Revaluation of assets and liabilities, sharing undistributed or accumulated profits and losses, treatments of goodwill, profit sharing ratios, like it can be new PSR, OPSR or sacrifice ratio, or for that matter here it is gain ratio. So this would be same as retirement of partner. So if you have any doubt in these adjustments, you can view the theory modules of retirement of partner, then again view all these adjustments once again, and then we will be ready to solve practical questions on death of partner. Here ends this theory module. In next module, we're gonna start with the practical question. We can get these adjustments practically solved, so you will understand better. So stay tuned, and till then complete all the theory part.